अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्दधे विष्णवे जिष्णवे शङ्किने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जाने वल्लभी वल्लभायाचितायात्मने कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः कृष्ण गोविंद के रमनारायण श्रीपते वासुदेवाजिता श्रीनिरे अच्युतानंद के माधवा दोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक राक्षसक्षोभित सीतया शोभितो दण्डकारण्यभूपुण्यताकारणं लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्त्यसम्पूजितो राघवः पातु माम् धेनुकारिष्णहारिष्णकृद्वेषिणा केशिहा कंसहृद्वंशिका वातक पूर्णनाकोपक सूरजाखेलनु बालको फालक पातु मां सर्वदा विद्युतुच्योतवत् प्रस्फुरद्वाससं प्राविडम्बोधवत् प्रोलसद्विग्नहं प्रणयामालया शोभितोरस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं पारिजाक्षं भजे कुञ्चिति कुन्तलै व्रजमानाननं रत्नमौलिं लसत् कुण्डलं गण्डयो हारकेयूरकं कङ्कणं प्रज्वलं किङ्किणी मञ्जुलं श्यामलं दम्भजे अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं श्रीमतः प्रत्यहं पुरुषसत्परं वृत्ततः सुन्दरं वेद्य विश्वं फलं तस्य वश्य हरे जायते सद्वलम् इति श्री शङ्कराचार्यविरचितम् अच्युताष्टकं सम्पूर्णम्।